small formation, whereas even numbers do 6 and 8. बिल्कुल सामने बना देती है। लैंडिंग में पोजीशन करते हुए विंग कमांडर डोरा एयरफोर्स कलर विनाल। Flying the Indian Air Force flag is Wing Commander Dora, depicting the motto of Indian Air Force, that is, Namo Pashyam Ishtar, or we say, touch the sky with grace. खुद ही तय करते हैं मंजिलें आसमानों की, परिंदों को दी नहीं जाती तालीम उड़ानों की, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। परफेक्ट लैंडिंग, जोरदार तालियां। इन्हें जाबाज़ों का स्वागत करो बठिंडा वालों। Of Indian Air Force. The Akash Ganga team is capable of jumping from a variety of aircraft, depending on the aircraft availability and the nature of display. The team has jumped from almost all the platforms available in the inventory of Indian Air Force, namely AN-32, Avro, Dornier, IL-76, Me-70, ALH helicopters, C-130 and C-17 transport aircraft. Give them a huge round of applause for undertaking this mission. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਟੀਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਡੋਰਾ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 에ਅਰਫੋਰਸ ਕਲਰ ਵੀ ਲਹਿਰਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਮਾਨ ਤੋਂ ਜੰਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ AN-32 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ, ਐਵਰੋ, IL-76, Me-17 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ALH ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, C-130 ਅਤੇ C-17 ਵਿਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
नंबर 1 की पोजीशन में उड़ान कर रहे हैं हमारे कमान अधिकारी। इनके ठीक पीछे उड़ान कर रहे हैं सूर्य किरण को विंग कमांडर अतुल यादव। With that stunning maneuver, this is the down to the team leader. Here is the move. भारतीय वायुसेना के आदर्श वाक्य कथन दृश्यम दीप्तम को चरितार्थ करते हुए introducing the rest of the team members, that is the odd numbers. Number 3 is Wing Commander Aerobatics. Number 5 is